Good afternoon, all of you. How are you all today? Hey, students, can you all turn on your cameras? Hamsiga, very good. Chedan, good. Sriram, very good. And what about the remaining students? Rajneesh, Abhirama, Rajeshri, Bhanu Prasad, Pavan Kumar, Lokesh, Sneha, Ashok Reddy, Kavya. Are you all happy today? Yes. You are going to get a whole day tomorrow. Tomorrow is Sunday, right? Good. Okay. Shall we go ahead with our session today? Okay, let me share the screen now. Okay, here we go. Class 7 English, Unit 3, C reading. The lesson is titled as The Magic of Silk. And our today's agenda is introduction, explanation of the lesson, and I will give you a homework at the end of the session. Here we go. We don't have much hard words in this lesson. The lessons are very familiar. The words in this lesson are very familiar to us. So we don't need to go ahead with the vocabulary section here. The magic of silk. This is a story from China. A long time ago, there lived an old woman in a hut in the forest. So in the forest, there was a hut. There lived an old woman. So where is this story happening? The story is happening in China. China is our neighboring country, isn't it? So a long time ago, there lived an old woman in a hut in the forest. Her husband had been killed by a tiger some years ago as they were living in the middle of the forest. What happened? Her husband, this old woman's husband, had been killed by a tiger some years ago. Always living in the middle of the forest is dangerous, isn't it? So there are many wild animals in the forest. They will attack at any time. So here our old woman's husband had been killed by a tiger. She was old and weak. Who was old and weak? The old man was old and old woman was old and weak. Life was difficult for her and her daughter, Simi. So this is a Chinese name which is very difficult to pronounce, isn't it? So Simi is the name of the old woman's daughter. So in the middle of the forest, there is a small hut. In that small hut, an old woman and her daughter lives. The name of the daughter is Simi. Next paragraph. Simi did all the cooking and cleaning herself. So Simi, she is a very hard worker. She did all the cooking and cleaning herself because she doesn't want to disturb the old woman. As the old woman is very weak, she is older, she is very weak. That's why her daughter, Simi, she had to do all the cooking and cleaning herself. She also looked after the silkworms in their garden. So they have a garden at their home. So in that home, they nurture silkworms. The worms gave them fine thread to make beautiful silk. So the silkworms, they gave them fine thread to make beautiful silk. Simi sold the silk to travelers in the village market. So after collecting silk from the silkworms, Simi sold the silk to travelers in the village market. In this way, she got enough money to buy food and other things. So every market day, she goes to the market and sells silk. So in that way, she earns some money
and she got enough money to buy food and other things. One day, as Simi was returning home, one day, what happened? Simi went into the market to sell her silk. When she was returning, it started to rain heavily. There was a heavy rain. There was a heavy rain. It was getting dark. It was getting dark too. So it is getting dark in the evening. When she was coming back, there was a heavy rain. So being a lady, being a girl, she might be afraid, isn't it? Simi ran into the first hut she saw. Then she saw a hut there. So she ran into the first hut. She went inside the first hut. The door was open and there was no one inside. Then what happened at the hut? The hut's door was open and she found nobody in that hut. Is anybody in? She called loudly again and again, but there was no reply. So when she entered into the hut, she asked whether there was anyone in the hut or not. She asked again and again, but there was no reply. From this, we can understand that there was nobody in the hut. But the door was open. Someone might be there. They might have gone out. Simi looked around the hut. Then she observed the hut. The floor was very dirty. When she looked at the floor was very dirty. Bowls and pots were left unwashed. She might have gone to the kitchen and saw that the bowls and pots, the vessels that were used to cook, were left unwashed. After using the vessels, it was kept unwashed. Simi swept the floor and washed all the bowls and pots. So then what Simi did, she swept the floor, she cleaned the floor and washed all the bowls and pots. Anyhow, she is not able to go back to her home, isn't it? And already I told you she was a very hard worker. When she saw that the floor was dirty, when she saw that the bowls and pots were unwashed, so she wanted to help those people who were living in. That's why she swept the floor and washed all the bowls and pots. See, let's go ahead with the second slide. See here, by the time she had finished, so when she had hardly finished cleaning the floor and washing the pots, what happened? The hut was as clean as a new one. So the hut looks a new one. It was as clean as a new one. By then, the rain had stopped too. I had better go home, she said to herself. Mother will be worried. By the time she had finished, what she had finished, sweeping the floor and washing the vessels. The hut was as clean as a new one. When she had cleaned the floor, when she had cleaned the vessels, what happened? The hut looks just as clean as a new one. By then, the rain had stopped too. When she had finished her work outside, the rain had stopped as well. Then she thought that it would be better to go home. She said to herself, mother will be worried. Being a lady, being a girl, if she's a little late to reach her home, always mothers will be worried. If it is a boy, she may not get worried. Mother may not get worried. But if the girl is coming home a little late, always the mother will become anxious and worried. So after cleaning, she wanted to go home as the rain has stopped. As she walked out of the hut, she saw a strange old man. When she came out of the hut, then she saw a strange old man. Strange, it means a strange man. If you are seeing a person for the first time, you can see he's a stranger. Otherwise, he's a familiar face, isn't it? Every day, if you see a person, will he be a stranger to you? No, he won't be a stranger to you. So, if a person is seen by you every day, it's a familiar face. But here, she saw a strange old man. His long beard, you observe this picture here.
the strange man is standing here along with Simi. So his beard is very long, you see, the beard. The hairs that you grow on your cheeks and this chin, this is called a beard. She saw a strange old man. His long beard reached down to his waist. So you could see the beard is very long. It reached up to his waist here. He looked about 100 years old. The man looks like 100 years old man. The old man looked at Simi and smiled. As Simi is coming out of his house, the old man looked at Simi and smiled. Uncle, she said, I went into the hut because it was raining. I hope you don't mind. Then when she saw the old man with the long beard, she said that, Uncle, she said, I went into the hut because it was raining. As it was raining, I went into your hut. I hope you don't mind. Not at all, young girl, replied the old man. Oh, no problem. I don't mind it. No, not a problem, replied the old man. His eyes fell on the clean floor and on the bowls and pots. Did you clean the hut for me? Then the old man looked around the house. Then he saw that his eyes fell on the clean floor. So he understood that Swimi had cleaned the floor. And on the bowls and pots, he also understood that the bowls and pots were cleaned by Swimi. Being an old man, he might be pleased with the character of Simi, isn't it? Did you clean the hut for me? He asked. Yes, answered Simi. Let me help you into the hut. Then Simi said that, yes, I did that. Let me help you into the hut. Let me take you inside the hut. Let me help you get inside the hut. The old man was very, very happy. You are a very kind girl, he said. I must give you a present. So the old man, he was very pleased with the character of Simi. Then she said that you are a very kind girl. I like you. And then he said, I must give you a present as you had cleaned my house. He took out a pair of scissors. Then he took out a pair of scissors and cut off a little of his long white beard. Then he cut off a little of his long white beard. Already I told you he had a long white beard. He cut a part of it. He cut off a little of his long white beard. He put it in a piece of old cloth. Then he took an old cloth and he put his beard inside that old cloth. Tied it up and gave the bundle to her. Do not give it to anyone, said the old man. Open it when you get home. So if somebody is cutting their beard and giving to you, what would you feel? You will feel terribly disgusted because you don't need others' beard, isn't it? If somebody is cutting a little hair from their head and giving you, will you take that as a present? You will throw him out, isn't it? You will never accept hair as a present. But here, what the old man did, he took out a pair of scissors, he cut off a little of his long white beard, he put it in a piece of old cloth, tied it up and give to her. See me, you had cleaned my house, you had cleaned the bowls and the pots for me, so you take a part of my beard. Will you be accepting that? If he gives any chocolate or some other gifts, maybe. But here the old man said that after giving that bundle, the old man said that do not give it to anyone. You should not pass it to anyone. You should not throw it away, said the old man. Open it when you get home. You could open the bundle when you get home. Before that, you shouldn't open. If you were in such a situation, what would you do? When you are going out, you will throw it off, isn't it? Beard, what is the use of beard? We don't have any use with that. Then, Swimi is a kind girl. She doesn't want to get the old man angry or sad. That's why she accepted the present.
Simi thanked him and went home. Then Simi said him thanks and she returned to her home. Her mother was glad to see Simi safe always. When the girl children, if they are a little late to reach home, your mothers will be very anxious and worried. In the same manner, what happened here, Simi's mother was also a little anxious and worried. When she reached home safely, mother was very happy. Glad, very glad, it means very happy. Her mother was very happy to see Simi safe. Simi told her mother about the old man. Then Simi explained what happened there in the old man's house, I mean hut. Simi told her mother about the old man. Simi opened the bundle to show her mother the old man's white beard. Then Simi opened the bundle to show her mother the old man's white beard. To their surprise, what happened? There was a surprise in the bundle. What was that surprise? They saw the finest silk thread in the wall of China. They saw the finest silk thread in the wall of China instead of the old man's beard. So from this, we can understand that the old man might be a magician, isn't it? Maybe a god. That's why beard changed into the finest silk thread in the wall of China. So Simi and her mother would be very happy and surprised. Actually, the old man took a pair of scissors, cut his beard, a little of his beard, and put it in a cover, put it in an old cloth, and tied it up and gave it as a bundle to her as a present. But here, when she reached home, she explained what happened to her at the hut to her mother. And when she opened the bundle to show her mother the old man's white beard, to their surprise, something had happened there. What was that? They saw the finest silk thread in the wall of China instead of the old man's beard. They began to wave with the silk thread. When they had finished waving, they had made the finest silk they had ever seen. So see what happened. They began waving. After waving, when they had finished waving, they had made the finest silk they had ever seen. The finest silk. So there may be a lot of customers for it. They could earn a lot of money with that silk. They noticed that the bundle of silk thread still remained exactly the same size as before. After waving, what happened? Again, the same size is still remaining. So they could make a lot of silk. They could make a lot of silk because it is never going to end. It is never going to end. Old man give a small piece of cloth, isn't it? A small piece of silk. But here, after waving also, the same is left with them as well. They noticed that the bundle of silk thread still remained exactly the same size as before. Even after utilizing, again the same amount, same size is left there. News of their wonderful silk spread far and wide. So the people started hearing about their wonderful silk. So the people from different parts of the country, they come to see me and they wanted to buy silk from them. News of their wonderful silk spread far and wide. The old woman and her daughter became famous and lived happily ever after. So what happened to them? The old woman and her daughter, they became famous because they are giving or they are making the finest thread, finest silk in the whole world. That's why the old woman and her daughter became famous and lived happily ever after. Till then, they were suffering a little, isn't it? The old woman, now the old woman and her daughter Simi were very happy as they could become very rich with that silk thread offered by the old man. Okay, this is a very small lesson. So if you are kind,
if you're generous, if you're helpful to somebody, what happens in your future? You will become successful. You will get a lot of help from others if you help somebody. If you are very kind towards others, they will also kind towards you. So always, whenever you get a chance to help somebody, don't make a second thought. You will have to go ahead with helping them. Okay, let me explain the question and answers here. What do you think the old man is? Justify your reason. What do you think? The old man may be a god, isn't it? The old man may be a god. He came to help Suemi and her mother. Do you believe in miracles? Are magic and miracles same? Give your reasons. So, do you believe in miracles? I don't know whether you believe in miracles or not, but we have to, isn't it? Are magic and miracles same? No, magic and miracles are different aspects. Magic, it means the people with skills they perform magic, but miracles usually done by the god. There is no magic in it, isn't it? So through magic, the magicians cheat us. But in case of miracles, the God help us. If you were swimming, how do you feel? You would feel happy if you were swimming. In the beginning, the life was a little hard for Simi and her mother. But now it was very easy. They became rich and they are living happily. And fourth question, whatever good we give out comes back to us. Do you believe in this? Whatever good we give out comes back to us. This is what I said you earlier. If you do something good towards someone, they will also help you when you are in need. If you behave in a bad manner, you can also hope to get it back, isn't it? Somebody will also behave towards you very badly. So help others to get help. That's why whatever good we give out, if you give out good, if you are generous, if you are kind, you can hope the same from them as well. Otherwise, if you are a person who is doing a lot of unhappy things, a lot of bad things, if you are acting in a mischievous way, nobody is coming to help you. If you need help, you will have to help somebody. That's why whatever good we give out comes back to us. Do you believe in this? You will have to believe in that. In the story, the middle-aged man was king. Think of a few reasons why it might not be safe for a little girl going to a stranger's house alone. In the past, in this story, it's fine, it's okay. But at the present situation, a little girl going to a stranger's house and staying there is very dangerous, isn't it? In the present days, we are hearing a lot of stories about girls who were tortured by people. So it shouldn't happen. It's always better to keep away from the strangers. Being girls, it's always you will have to take care of yourselves. You have to keep away from strangers. Even if a door is open and nobody is in, you should not go inside in such circumstances. In the past, the people were good. In the past, the people were good. Their mentality was good. But here now, in the present generation, the mentality of the people are not so good. So being a girl, it was not good for Simi to get inside the house, isn't it? According to our opinion, it was not so good. Okay, that's all from this lesson. Now I want somebody to read this lesson. I will unmute somebody and you will have to read 2 or 3 paragraphs. Okay. Hamsia, can you unmute? Hamsia, can you hear me? Yes, sir. I cannot hear you, Hamsia. Your sound is Sir. not audible to me.
Can I read, sir? Sir? Do you have an option to unmute there in your mobile? Yes, sir. No. Shiva, can you unmute? Unmute, sir. Speak. I cannot hear you. Sir. Then what about Sir. Rajeshwari? B. Rajeshwari, can you unmute? Ring. Okay, speak. Okay, Sahasra. Unmute Sir. first. Sahasra, I cannot hear your voice. Sir? No, I cannot hear you. Hello, sir. What about Pawan Kumar? Sir. Can you unmute? Pawan. Sir. English. Pratyusha. Speak. Read. No, I cannot hear you. Just a minute, just a minute. Sir. Hello, sir. Hello, sir. Okay, everyone wait for a moment, wait for a moment. Okay, Sahasra. Sir? Okay, just wait, just wait. Let me enlarge the screen now. Okay, start reading from here. First two paragraphs. This is the magic of silk. This is the story from China. A long, long time ago, there lived an old woman in a hut in the forest. Her husband had been killed by a tiger some years ago. She was old and weak. Life was difficult for her, and her daughter Simi, See me. Simi did Okay. all the cooking and cleaning herself. She also looked after the silkworms in their garden. The worms gave them fine thread to make beautiful silk. Sumi sold the silk to travelers in the village market. In this way, she got enough money to buy food and other things. Okay, very good, very good. Sahasra, you have to pick up the speed, okay? Pratyusha, Sir. go ahead with the next two paragraphs. One Sir, day, second para. third, one day. Next two I said, one day. Yumi was returning home. It started to rain heavily. It was getting dark too. Yumi ran into the first hut she saw. The door was open and there was no one inside. Is anybody in? She called loudly again and again, but there was no reply. Yumi looked around the hut. The floor was very dirty. Bowls and pots were left unwashed. Sumia swept the See floor me. and washed all the bowls and pots. Okay, very good, very good, very good. Advaita, can you? Sir. Wait, next two paragraphs.
Okay. Sir, can I read? Yes. By the time she said had finished, the hut was as clean as a new one. By then the rain had stopped too. I had better go home, she said to herself. Mother will be worried. As she walked out of the hut, she saw a strange old man. His long beard reached down to his waist. He Down to looked his about waist. 100 years old. The old man looked at Sumi and smiled. Okay, very good. Next, Rajeshwari. Tanuja. Yes, sir. Okay, go ahead with reading. Uncle, she said, I went into the hut because it was raining. I hope you don't mind. Not at all, young girl, replied the old man. His eyes fell on the clean floor and on the bowls and pots. Did you clean the hut for me? Yes, answered Simi. Let me help you in the hut. The old man was very happy. You are a very kind girl, he said. I must give you a present. Okay, that's enough. Varun Kumar, Nallabelli. Go on, continue. As she walked out of the hut, she saw a strange old man. His long beard reached down to his waist. He looked about 100 years old. The old man looked at Stewie and smiled. Uncle, she said, I want into the hut because it was raining. I hope you don't mind. Not at all, young girl, replied to the old man. His eyes fell on the clean floor and the bowls and did you clean the hut for me? Yes, answered the Swami. Let me help you into the hut. The old man was very happy. You are a very kind girl. He said, I must give you a present. Siddhartha. Continue. He took out a pair of scissors and cut off a little of his long white beard. He put it in a piece of old cloth, tied it up, and gave the bundle to her. Do not give it to anyone, said the old man. Open it when you get home. Yumi thanked him and went home. Her mother was very glad to see Yumi safe. Yumi told her mother about the old man. Yumi opened the bundle to show her mother the old man white beard. To their surprise, they saw the finest silk thread in the whole of China. They began to weave with the silk thread. When they had finished the weaving, they had made the finest silk they had ever seen. They noticed that the bundle of silk thread is remained exactly the same size as before. News of her wonderful silk spread far and wide. The old woman and her daughter became famous and lived happy ever after. Okay, that's enough. So students, this is the end of our session, and in the next session we will be going ahead with the next unit. I mean fourth. Just wait, let me mute you all. So it was reading the magic of silk, and the entire unit had been finished. And in the next session, we will be going ahead with the next unit. I mean fourth unit. Okay.
So don't forget to read 2 or 3 paragraphs every day. Thank you all. Good afternoon, students. Welcome to Sanvi Learning Services. I'm your Hindi teacher, myself, Babu sir. How are you, children? I hope everybody are fine. Okay. In the last session, we have started our new lesson, 8th lesson. Okay. Did you listen, everyone? Okay. What is our new lesson name? What is our new lesson? हमारे त्योहार. Okay. Rajanish Sharma, unmute. हाँ सर. राजनीश शर्मा, लास्ट डे तुम प्रेजेंट नहीं हुए शायद. सर नहीं सर, मैं बीच में छोड़ दिया सर. हाँ, ओके ओके. सर मेरा वाईफाई ऑफ हो गया था इसलिए. हमारा आर्ट ऑफ आर्ट क्या है? सर हमारा त्योहार. हाँ, सो उस दिन हम लोग के चित्र के बारे में वर्णन कर चुके थे. हाँ और शायद पाठ भी पढ़ चुके थे एक बार. हाँ सर. तो लेसन का एक्सप्लेनेशन करेंगे. सो एक बार चित्र को देखो, और तुम भी लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं हुए ना, सो एक बार चित्र के बारे में तुम्हारा अभिप्राय क्या है बताओ. सर चित्र में सर ऑन द स्क्रीन. सर चित्र में लोग बतकम्मा का त्योहार मना रहे हैं और फिर बतकम्मा का त्योहार मना रहे हैं. यह त्योहार अश्विन मास की अमावस्या से शुरू होता है और यह त्योहार 10 दिन तक चलता है. इस त्योहार के दिन लोग फूलों की बतकम्मा बनाते हैं और उसे आखिरी दिन पानी में डुबा देते हैं, जिससे कि पानी की भी शुद्धि होती है. और अथवा इस त्योहार को अमावस्या के दिन से मनाया जाता है. ओके. सो बतकम्मा को पानी में क्यों निमज्जन करते हैं? सर इससे पानी की शुद्धि होती है सर. और पानी की शुद्धि होती है और जिससे कि बतकम्मा को गौरम्मा कहा जाता है, यानी कि गंगा के घाट से शिव जी की हिमालय तक पानी एक बतकम्मा जा सके, इसलिए. ओके. सो बात करेंगे तो कुछ प्रकार के हमारे त्योहार साइंस पर निर्भर है, राइट और रॉन्ग? यस सर. हाँ सर. यस. सो पानी में जैसे हम लोग का तालाब में, गड्ढे में, कैनाल में, गोदावरी में हम लोग इसका निमज्जन करते हैं. तो उसका कारण क्या है? ये फूलों के सुगंधों के द्वारा या फूलों के द्वारा बहने वाले रसों के द्वारा उसमें रहने वाले कुछ कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया भी मर जाते हैं. और ये पानी खेतीबाड़ी के लिए भी अच्छी है और पानी की शुद्धि है मेनली. ओके. यस. ओके, समझ में आया? उस दिन भी डिस्कस कर चुके थे. और कुछ त्योहारों के नाम बताइए. सर गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, संक्रांति, होली अथवा. ओके. तुम्हारा मनपसंद त्योहार क्या है? सर संक्रांति. क्यों? सर उस वक्त हमें बहुत सारी पतंग उड़ाने को मिलता है. राजनीश शर्मा, थोड़ा ऊंचे स्वर में बात करो. सर मेरा पसंदीदा त्योहार संक्रांति है सर, क्योंकि उस दिन घेवर और मिठाइयाँ और पतंग उड़ाने को मिलता है. ओके ओके ओके. द लास्ट क्वेश्चन. स्त्रियां क्या गा रही होगी शायद इस चित्र में?
स्त्रियां बतकम्मा बतकम्मा उయ్యాలో बोल के गा रही होगी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। शायद बतकम्मा के समय बतकम्मा ही गाना गाते हैं ना। वेरी गुड आंसर। ओके, और ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में तुम्हारे इलाके में बतकम्मा त्योहार जैसे दसरा हम लोग सेलिब्रेट कर चुके हैं ऑलरेडी, 1 महीना हो गया, 1-2 महीना, कैसे हुआ तुम्हारा सेलिब्रेशन? सर हमारे घर के पास बड़ा कॉरिडोर है सर, उधर ही मनाया गया बतकम्मा। ओके, हर साल से देखेंगे तो इस साल थोड़ा कम हुआ शायद। हाँ सर, हम हर साल कॉरिडोर में नहीं मनाते हैं सर, हम रोड पे जाके खेलते थे, पर इस बार कॉरिडोर में मनाया गया। ओके 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 ओके। और राजनीश शर्मा सर पाठ को पढ़ो अच्छे से, ऊंचे स्वर में। ओके सर। लाउडली। शारदा और रशीदा दोनों सहेलियां हैं, वे एक ही पाठशाला में पढ़ती है, दशहरा की छुट्टियों के बाद मिलती है, बातचीत करती हुई चलती है। रशीदा, कैसी हो शारदा? शारदा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रशीदा, मैं भी ठीक हूँ, तुमने दशहरा कैसे मनाया? शारदा, बहुत अच्छी तरह। रशीदा, दशहरा त्योहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है? शारदा, दशहरा त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, इस दिन जगह जगह पर गौरी पूजा की जाती है। रशीदा, तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? शारदा, हमारे तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा के रूप में बतकम्मा त्योहार मनाते हैं। रशीदा, हाँ मुझे पता है, हमारे पड़ोस में भी बतकम्मा खेलते हैं, तरह तरह के फूलों से सजी बतकम्मा सुंदर लगती है। शारदा, सही कहा तुमने, महिलाएं और लड़कियां सामूहिक रूप से गीत गाती हुई बतकम्मा के चारों ओर घूमती है, बतकम्मा को गौरी माँ का रूप मानती है। एक बार बतकम्मा की 2 पंक्तियां गाकर सुनाओ ना। शारदा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लो सुनो। బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు గోరమ్మ ఉయ్యాలో మా ఊరుకి వచ్చింది ఉయ్యాలో మా ఇంటికి వచ్చింది उయ్యాलो। रशीदा, वाह बहुत अच्छा गीत है। बतकम्मा जैसे लोग उत्सव देश की शोभा बढ़ाते हैं। रशीदा, हाँ शारदा तुम ठीक कहती हो, अच्छा मैं चलती हूँ। ओके, शायद प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। तो ये छोटा सा पाठ हमारे बतकम्मा त्योहार के बारे में, दशहरा है, और बतकम्मा त्योहार के पीछे अनेक प्रकार के पौराणिक गाथाएं भी होती है, जैसे पांडव वनवास में जाते हैं और सत्यभामा। सो इस तरह की कुछ कहानी हम लोग देख सकते हैं। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे तो ये पाठ में बतकम्मा। तो राजनीश शर्मा सर, उस दिन तुम नहीं आई इसलिए आज तुमको पनिशमेंट, हर एक प्रश्न तुमको। ओके सर, आई एम रेडी। बतकम्मा कैसे सजाते हैं? सर बतकम्मा फूलों से सजाते हैं। जैसे थोड़ा क्लुप्त में बताओ। सर बतकम्मा फूलों से सजाते हैं, और कुछ फूलों के नाम चांदनी, गुलाब और चमेली अथवा। तो एक एक पंक्ति में एक एक प्रकार का फूलों को सजाते हुए बड़ा सा बतकम्मा बनाते हैं, फूलों का बतकम्मा बनाते हैं। हाँ, शायद अभी नवरात्रि खेलते हैं, 10वें दिन हम दसरा को लाइक जंबी वृक्ष के पास जाकर वो पत्ते एक दूसरे को देखते हुए गले मिलते हुए शुभकामनाएं बताते हैं। हाँ सर। निमज्जन के दिन निमज्जन होने तक वो कार्यक्रम के बारे में बताओ। सर अबाउट मतलब बतकम्मा के बारे में या फिर नवरात्रि के बारे में? सर दोनों को। जो समझो आज बतकम्मा का निमज्जन है। हाँ सर। हमारे घर में फूल लाए, सुबह से माँ बहन सब लोग, हम लोग हाथ बढ़ाए और बतकम्मा को सजाए, और गौरी माता की पूंज में वो एक खोदते हैं, वहां लेके जाते हैं खेलने के लिए। वो पूरी क्रिया क्या है वो कार्यक्रम बताओ। सर तो फिर बतकम्मा त्योहार के वक्त कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें कि घर में अनेक प्रकार के फूल लाए जाते हैं, जिसमें कि चांदनी फूल, चमेली, गुलाब और अथवा अनेकों फूल लाए जाते हैं। इसमें लड़कियां और औरतें एक फूलों को अच्छे से एक लड़ी से लड़ी सजाते हुए एक बड़ी बतकम्मा बनाती है, और उसके बाद में वो उसे बाहर ले जाके सामूहिक रूप में बीच में रख के सबके साथ में खेलती है। और उसके बाद वो
घर की टांकी में या फिर नदियों में या फिर और गड्ढे में बतकम्मा का विसर्जन कर देती है। ओके। तो बतकम्मा निमज्जन के दिन प्रजाओं के अभिप्राय कैसे रहते हैं, उनके फीलिंग्स कैसे रहते हैं, उनके दिल के विचार कैसे रहते हैं? सर बतकम्मा के दिन औरतों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि बतकम्मा बनाने के लिए, और जन अभिप्राय ये होता है कि तेलंगाना राष्ट्र में सभी को 10 दिन की छुट्टी दी जाती है बतकम्मा के त्योहार के रूप में, या नहीं तो दशहरा के रूप में सबको छुट्टी दी जाती है। और उसके बाद में सब जन इस त्योहार को उत्साह के साथ मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ओके। तेलंगाना राज्य का राज्य त्योहार क्या है? तेलंगाना राष्ट्र का त्योहार बतकम्मा है सर। दसरा कुल मिला के। हाँ सर। क्यों इतने सारे फेस्टिवल, इतने सारे त्योहार रहने के बावजूद भी दसरा को ही क्यों मनाया गया? इतने सारे त्योहार रहने के बावजूद भी तेलंगाना राज्य के राज्य त्योहार के रूप में दसरा को ही क्यों चुना गया? सर क्योंकि इस वक्त बतकम्मा हर एक तेलंगाना वासी इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ पहले से मनाते हैं और मना रहे हैं, और इसी के लिए बतकम्मा त्योहार नहीं तो दशहरा को ज्यादा प्राथमिकता या फिर राष्ट्रीय त्योहार के रूप में चुना गया। और तेलंगाना मूवमेंट में कौन सा त्योहार का आयोजन किया गया? तेलंगाना मूवमेंट में कौन सा त्योहार का आयोजन किया? 2014 में आप छोटे थे, सो तेलंगाना मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा राजनीति के लोग, जैसे महिलाएं अनेक प्रकार के जगहों में, जैसे डिस्ट्रिक्ट टाउन हेडक्वार्टर्स, लाइक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, मंडल हेडक्वार्टर्स, वहां सब लोग बतकम्मा सजाते हुए तेलंगाना युद्ध में उन लोग भी अपना भाग लिए हैं। सो तेलंगाना राज्य का राज्य त्योहार उस तरह भी हम लोग कह सकते हैं कि बतकम्मा है। ओके, सो आज हम लोग पाठ में जाएंगे। क्या बता रही है? दोनों सहेली का नाम क्या है? शारदा और रशीदा। हाँ, सो शारदा हिंदू धर्म की है, रशीदा मुस्लिम इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म की। दोस्ती में कोई धर्म भेद होता है? धर्म का भेदभाव नहीं, नहीं। दोस्ती के लिए क्या जरूरी है? सच्चा दिल, अच्छा मन। यस और नो? हाँ सर। यस। दोस्ती करने के लिए कोई रिवाज, जाति पंथ और ये धर्म का भेदभाव हमारे दिल में कभी भी नहीं रखना। ऊंच नीच का भेदभाव भी हम लोग कभी भी नहीं रखने। जैसे मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं तुझसे कैसे दोस्ती करूंगा? मैं सफेद हूँ तो काला है, मैं कैसे तुझे दोस्ती करूंगा? ऐसे कोई भी भेदभाव नहीं रखना। मैं ये कास्ट वाला हूँ, तू वो कास्ट वाला है, मैं ये धर्म का हूँ, आप ये धर्म के हैं, ऐसे कोई भी भेदभाव दोस्ती में नहीं रहती है। अगर ऐसे भेदभाव रखेंगे तो उसे दोस्ती ही नहीं कहेंगे। ओके, हम लोग दोस्ती के बारे में भी सब कुछ बात कर चुके थे। दोस्ती के बारे में भी हम लोग अनेक प्रकार के विषय में बातचीत कर चुके थे। एस भास्कर, राजन शर्मा, फिर मिलूंगा तुमसे। एस भास्कर, unmute yourself. Bhaskar, unmute. Okay. Hello, sir. Who is the student actually? I am, sir. What about you? Decide. My brother, sir. Which class? 10th class, sir. Okay, not a problem. Bhaskar, up to now, your brother Rajanish Sharma have answers. I think you understand. Sir? तुम अभी तक राजनीश शर्मा को अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे थे, उन्होंने अनेक प्रकार के समाधान दिए, तुम सुन चुके हो? यस सर। ओके, तुम्हें एक प्रश्न, दोस्ती के बारे में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट फ्रेंडशिप? इजी क्वेश्चन। I don't know, sir. What happened? Sir, here have disturbance, sir. हाँ, I can hear you. Please. स्नेह के बारे में, दोस्ती के बारे में आपका अभिप्राय बताओ. That's it. Easy, no?
कौन बताएंगे? नुसैबा। नुसैबा सर। कैसी हो? फाइन सर। हाँ, अभी तक तुम्हारे भाई जो राजनीश शर्मा कुछ समाधान बताए थे सुन चुकी हो? यस सर। राइट। अब तुम्हारे लिए एक प्रश्न, जैसे अभी तक तुम्हारे जो दूसरे भाई को भी पूछा था, स्नेह के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में तुम्हारा अभिप्राय क्या है? सर दोस्ती बचपन से लेकर आखिरी तक होती है सर। अगर दोस्ती निभाना है तो पूरे दम है तब तक निभानी चाहिए सर। वेरी गुड। दोस्ती का रिश्ता बहुत अलग रहता है सर। जैसे कि हम हमारे बात शेयर कर ले सकते हैं। ओके। सब कुछ। ओके। हाँ, अगेन। सच्चा दोस्त हमारी हर मुसीबत पर काम आता है सर, हमारी मदद करता है। ओके, हर एक कष्ट सुख में। वेरी गुड, गुड पॉइंट्स नुसैबा, वेरी गुड। कंटिन्यू अगेन। दोस्त हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। ओके। और कोई कोई हम बड़े होने तक भी दोस्ती निभाते हैं, जैसे मेरे मम्मी के फ्रेंड्स सर। ओके, मुझे कुछ डाउट आ रहा है, तुम्हें तो कोई बता रहा है? नहीं सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ। ऐसा? ओके ओके, वेरी गुड। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मेरे ग्रैंडमदर की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए पैरालिसिस अटैक आया। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। एंड प्लीज एवरीबॉडी अप्रिशिएट नुसैबा, वो हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी वो क्लास सुन रही है। रियली ग्रेट यू। ओके, सो इंटरेस्ट रहेंगे तो हम लोग कहाँ भी रहकर हमारे क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कैपेसिटी, वो दम नुसैबा में है। शायद आप सब लोग भी अच्छे हैं, आप भी हर एक कष्ट का सामना करते हैं। वेरी गुड। सो दोस्ती के बारे में तुम्हारी बहन जो बताई थी, मरते दम तक रहने वाली एक नाता ही दोस्ती कहलाता है। ओके, सो बीच में छोड़ जाने वाले रिश्ते को हम लोग दोस्त नहीं कहते हैं। दोस्त पैदा होने से शुरू या हमारे जिंदगी में आने से शुरू, मरते दम तक जो व्यक्ति हमारे साथ निभाता है, हमारे साथ साथ गुजरता है, उसे हम लोग सच्चा दोस्त कहते हैं। और सच्चा दोस्त हमारे कष्ट सुख में भाग लेता है। और दोस्ती के लिए कोई भी भेदभाव, धर्म भेदभाव, जाति भेदभाव, प्रांत भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ओके, सो ऐसे भेदभाव को हमारे दिल से निकाल देना चाहिए और मन को गौरव करना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति के दिल को देखकर, उनके मन को देखकर हम लोग का दोस्ती करनी चाहिए, ना कि उनके जायदाद या पैसे को या उनके शोहरत को देखकर हम लोग दोस्ती करना। अगर ऐसे करेंगे तो उनके पास जितने पैसे हैं तब तक हम लोग दोस्ती करेंगे, उनके पास पैसे समाप्त होंगे तो वापस दूसरे व्यक्ति को चुनने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसा रिश्ता सच्चा दोस्ती नहीं कहलाता है। दैट इज नॉट ए ट्रू फ्रेंडशिप। ओके, ट्रू फ्रेंडशिप इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन मनी और वेल्थ। ओके, सो सच्चा दोस्ती अपने हृदय पर, सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित होती है। और ऐसा ही कुछ दोस्तों के बारे में आज हमारे पाठ में बातचीत करेंगे। वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि, वो सहेलियां और कोई नहीं बल्कि शारदा और रशीदा। यहाँ दोनों सहेलियां हैं। ओके, ये दो सहेलियां दो प्रकार के धर्म के लोग हैं। जैसे शारदा हिंदू है और रशीदा इस्लाम है, मुस्लिम। ओके, दोनों सहेलियां हैं, वे एक ही पाठशाला में पढ़ती हैं। मे बी इन योर क्लास आल्सो you have a lot of friends in that so many different kinds of religion friends are so there, maybe yes or no? Do you have friends like a Christian, Muslim, different kinds of religion peoples? Okay, the friendship, it is not depending on any religion. Any rule is there in the friendship. There is a one condition, only Hindus between only should be continue friendship, or Islam people between only should continue friendship, like that rules are there? No. If that, like, if we will feel in that particular way, then that is not a true friendship.
Okay, that is a selfishly we are thinking. It is not fair. दोस्ती के लिए, स्नेह भावना के लिए कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं रहना चाहिए. ओके, सो क्या बता रहे हैं यहाँ कविकार, रचनाकार? शारदा और रशीदा दोनों सहेलियां हैं और एक ही पाठशाला में पढ़ती हैं. That they are two friends and they are two friends studying in one school only, like your school. Think now, one of the candidate you and one more candidate your friend. Like if you are the Sharda, then your best friend it is a Rashida. Think. Then you are the Rashida, then your best friend it is a Sharda. Okay, so like that you both are studying in one school and दशहरा की छुट्टियों के बाद मिलती है. सो एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और उनको दशहरा की छुट्टियां आई हैं. दशहरा की छुट्टियां आने के बाद 10 दिन या 15 दिन मौज धूमधाम से उन लोग एंजॉय कर चुके हैं. दशहरा त्योहार को या नवरात्रि को अच्छे से खूबसूरती से खुशी से समाप्त कर चुके हैं और दशहरा के दिन अपने परिवार के साथ बहुत मजा कर चुके थे. और छुट्टियां समाप्त होने के बाद एक बार उन लोग का मिले तो क्या हुआ? बातचीत करती हुई चलती हैं. दे आर टॉकिंग एंड वॉकिंग. ओके, डिस्कसिंग एंड मूविंग ऑन द रोड. What they are discussing? The recently Dasara festival completed, no? So 100% they will discuss about Dasara festival. Okay, same. Then Rashida asking, "Kaisi ho Sharda?" Rashida asking to Sharda. It is a conversation method. संवाद रूप का पाठ है. कैसा पाठ है ये? संवाद. एक प्रकार का, म्हणजे दो व्यक्तियां अपने दिल के विचार को प्रकट करती है, नहीं तो कोई एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं. ओके, रशीदा कहती है, कैसी हो शारदा? हाउ आर यू शारदा? देन शारदा रिप्लाइंग, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? देन रशीदा रिप्लाइंग, शारदा रिप्लाइंग, बहुत अच्छी तरह. Rashida said, hi, how are you? Then Sharda replied, I'm fine, what about you? Then Rashida replied again, मैं भी ठीक हूँ, I am also very fine. तुमने दशहरा कैसा मनाया? How did you celebrate the Dasara festival? The Dasara festival, it belongs to Hindu tradition, no? Then Rashida is a Muslim. Even though she's participated in that festival, but mainly who will celebrate? Hindu peoples will celebrate. Yes or no? That's why Rashida asking, how did you celebrate Dasara? We got a 17 hours, 15 vacation days. That means holidays. How did you celebrate? How did you enjoy? Then Sharda replied, bahut achhi tarah, full enjoy. I enjoyed a lot in the Dasara festival. And explaining how she has celebrated that festival. About that festival, she's giving an answer. Then Rashida asking, Dashara Tyohar kaha manaya jata hai? Dasara Tyohar kaha manaya jata hai? Where we can celebrate this Dasara festival? Then Sharda replying, Dashara Tyohar pure desh mein manaya jata hai. Not only in Telangana or not only in Andhra Pradesh. Okay, Dasara festival we are celebrating in whole country. Okay, it is a South India, North India, East India, West India, wherever also. Whole India we are celebrating Dasara festival. It is not only particular state festival. It is a national festival. Okay, but in our Telangana we will celebrate again different kindly. Okay, different methodly we will celebrate. Like one of the prayer like Gauri Puja. Okay, so कुछ व्यक्तियां दुर्गा माता को आविष्कार करते हैं, आह्वान करते हैं और उनको नवरात्रि सेम गणपति की तरह, विनायक चविति की तरह दुर्गा देवी की पूजा करके 10वें दिन या 9वें दिन के रात्रि दुर्गा देवी को भी पानी में विसर्जन करते हैं, निमज्जन करते हैं. और कुछ लोग बतकम्मा को सजाकर हर रोज एक खड्डे खड्डे के पास जाकर उसके गोल गोल घूमते हुए उन लोग का वो बतकम्मा के सॉन्ग्स, बतकम्मा के गाना गाते हुए उन लोग का सेलिब्रेट करते हैं. और हर रोज वो बतकम्मा को छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे तालियों में लेके जाके हर रोज रात्रि वही खड्डे में उन लोग का निमज्जन करते हैं. और अंतिम लास्ट दिन खूब तरह से बड़े बड़े बतकम्मा को सजाकर का रंग बिरंगी फूलों से सजाकर
अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, गहने लगाकर, ऑर्नामेंट्स उपयोग करके खूब धूमधाम से उन लोग वो बतकम्मा को खेलते हुए अपने सर के ऊपर उठाकर एक कैनाल में या तालाब में या गोदावरी में निमज्जन करते हैं। हर एक गांव में ये कार्यक्रम होता है, हम सबको मालूम है। यस और नो? यस। सो क्या बता रही है? दशहरा त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। दशहरा त्योहार कहां मनाया जाता है? पूरे देश में, इन होल कंट्री। इन दिनों जगह जगह पर गौरी पूजा की जाती है। इन दिस पर्टिकुलर सेशन or in that particular time, that means Navaratri, no? Navaratri mean what? 9 nights. 9 nights. 9 రోజులు. Okay. Every day in different place they will celebrate the occasion of Gauri Puja. Okay. So जगह जगह पर गौरी पूजा की जाती है इन दिनों, that means that particular 9 days. Then Rashid asking, तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा किस तरह के रूप में मनाते हैं? हमारे तेलंगाना राज्य में या आंध्र प्रदेश के राज्य में, हमारे म्हणजे तेलुगु राज्य 2 है ना, तेलुगु भाषा बात करने वाले राज्य कितना है अभी? पहले आंध्र प्रदेश थे, अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, इसलिए तेलुगु भाषा बात करने वाले राज्य 2 है। ओके, एक तेलंगाना है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। ये पूरे तेलुगु जाति के प्रजाएं, क्या हुआ? तेलुगु जाति के प्रजाएं क्या करते हैं? धूमधाम से ये दशहरा बतकम्मा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा किस त्योहार के रूप में मनाते हैं करके रशीदा पूछी। रशीदा इस्लाम धर्म की है, उसे नहीं मालूम ना हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम। तो शारदा उन्हें समाधान दे रही है। हमारे तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा के रूप में बतकम्मा त्योहार मनाते हैं। क्या बता रही है? गौरी पूजा कौन से रूप में मनाते हैं तेलंगाना राज्य में? बतकम्मा के रूप में मनाते हैं। और नॉर्थ इंडियन में देखेंगे तो क्या करते हैं? उन लोग दुर्गा देवी को आह्वान करते हैं, एक मंच पर बिठाते हैं, नवरात्रि पूजा करते हैं और सेम गणपति की तरह, विनायक की तरह 10वें दिन या 9वें दिन की रात्रि एक बड़े बड़े लॉरी में, ट्रक में, ट्रैक्टर में विसर्जन करने के लिए समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, कैनाल में लेके जाकर पानी में विसर्जन करते हैं। ओके, और हमारे यहाँ क्या होता है? बतकम्मा को ही हम लोग गौरी देवी के रूप में मानते हैं, इसलिए तेलंगाना राज्य में गौरी पूजा के रूप में बतकम्मा त्योहार मनाते हैं। और रशीदा पूछ रही है, हाँ मुझे पता है, यस आई नो, हमारे पड़ोस में भी बतकम्मा खेलते हैं। पड़ोस बोले तो क्या है? हमारे नाइबर्स, जो आजू बाजू रहने वाले। ओके, हमारे घर के आजू बाजू में रहने वाले नाइबर्स कहते हैं, उन्हें पड़ोस कहते हैं, सराउंडिंग एरिया पीपल। ओके, सो क्या बता रही है? Yes, I know. My neighbors also played that. They also participated in the Batkama festival. Okay, so क्या बता रही है? हमारे आजू बाजू वाले भी ये बतकम्मा खेल खेलते हैं, मैं देख चुकी हूँ, मुझे पता है। हमारे कॉलोनी में कि ये त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। तरह तरह के फूलों से सजी बतकम्मा सुंदर लगती है। क्या बता रही है? ये देखो, यहाँ एक माँ और बेटी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो तुम लोग। ये चित्र में क्या बता रहा है? एक माँ के हाथ में बड़ी बतकम्मा है और उनके बेटी के हाथ में एक छोटी सी बतकम्मा है। सो ये क्या कह रही है यहाँ? रंग बिरंगी फूलों से, अनेक प्रकार के फूलों से सजी बतकम्मा बहुत सुंदर लगती है। सुंदर रूप से उसे सजाते हैं और सजाकर एक ही जगह पे, जहां एक खड्डे खोदते हैं, ओके, वो खड्डे के आजू बाजू लगाते हैं। ओके, लगाकर उनको सजाकर इन लोग भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अपने आप को अच्छे से सजावट कर कर वहां जाकर खेलते हैं। शारदा बता रही है, सही कहा तुमने। शारदा अप्रिशिएटिंग टू रशीदा। यस माय डियर फ्रेंड रशीदा, व्हाट डिड यू से? इट इज एब्सोल्युटली राइट। यस, यू आर राइट। महिलाएं और लड़कियां सामूहिक रूप से गीत गाती हुई बतकम्मा के चारों ओर घूमती हैं। बतकम्मा को गौरी माँ का रूप मानती है। ओके, सामूहिक मीन व्हाट? लाइक सब लोग एक ग्रुप में होकर, एक ग्रुप में रहकर, लाइक राउंड अप रूप में रहकर गीत गाते हुए, अनेक प्रकार के बतकम्मा के गीत गाते हुए उन लोग चारों ओर घूमते हुए
ये बतकम्मा को गौरी माँ के रूप मानते हुए उन लोग बतकम्मा खेलते हैं। और शायद जो लोग अभी हमारे क्लास सुन रहे हैं, लाइक सुरगनी दीप्ति, NHSN प्रत्युषा, everybody, maybe you also played Batkamma. Am I right? Yes. How did you like it? Did you like it, that Batkamma? Yes. So in our particular country or in our state, nobody is there, I won't like a Batkamma festival like that. Anybody will tell? No. Everybody will like, and we will feel sad that the Dasara vacation completed this much fastly. Yes or no? Okay, we will feel again few days will be mean good, but not in our hand, no? Okay, how that Dasara, Navaratri will complete, we cannot guess that much fastly, that much enjoyably, we will continue our vacation. So same here, Rashida, what explained that everything is right, like Sharda appreciating to Rashida. Then Rashida asking one more question. एक बार बतकम्मा की 2 पंक्तियां गाकर सुनाओ ना. Then please 2 lines of any Batkamma song, like Rashida asked to Sharda. Then Sharda replied, ha, kyun nahi? Yes, yes, why not? No, suno. Then listen now. I will sing. You're my friend. You asked and I won't sing. What is that? Huh? Never. I can sing for yourself. Then she sang that song. Batkamma, Batkamma uyyalo, Bangaru Gauramma uyyalo. Ma uri kochindi uyyalo, ma inti kochindi uyyalo. Like that 2 lines. But now, present generation, you people will like this normal songs. No. Nowadays, the Batkamma celebration is going to different way. Big DJs, they are keeping sound speakers, big boxes, and kinds of local songs. Now recently then one very famous song came, no? Adanemali, Maganemali, something. Okay. That written by, her name what? Who is that singer? Can anybody will tell? Nobody? Mangili. Yes. No? So it's very famous became, no, the song, like Pacha Pachani Pachani Palle, like that song. And again something Dibri Dibri Dibri, something songs will be, that full Josh will come. And again, what songs are there? Again, different songs. I don't know, I'm not getting, but you know, you played. Okay. So while playing, you will forget everything, the tensions and everything, the school. Oh, school we won't remember. Why? Because this is not time to study. No, this is time to celebrate, enjoy. Okay, that particular day, that particular way you enjoyed that 9 days or 10 days. Then I'm requesting you, each and every student and each and every human being, to continue your life that particular way. That means should not be sad. Every day like a Batkamma festival, like should continue our life. Then we will leave again some 4 days extra. That means not only 4 days, I'm saying our livelihood style will be increased. Our life will be increased and the happiness will be increased. Mean we will be very healthy even. Okay. जो हंसेगा, जो खुशी से रहेगा, उनके 4 दिन की जिंदगी बढ़ेगी और वो उनके म्हणजे तबीयत भी ठीक तरह से रहेगा. He won't get any disease. Those peoples will continue their life with fully of happiness. Then, my dear students, are you continuing your life with fully of happiness? Yes. Okay. Indian Army trainer. Okay. So are you continuing your life with fully of happiness? जो लोग हमारे जिंदगी खुशी से चल रही है, हम लोग बहुत खुश है सर करके बताने वाले, एक बार थम्स अप सिंबल लगाओ. राजनीश, राजेश्वरी, चंद्रवंशी, very good. Sabil, Amulu. Okay. And maximum students, please, you didn't on your camera. Put on camera, everybody. Spurti. Okay, good. Jo bhi ho.
थैंक यू एवरीबॉडी। सो अगर हम लोग खुशी से रहेंगे तो हमारा दिमाग ठीक तरह से चलेगा, हम लोग अच्छे से रहेंगे। ओके, सो इसीलिए हर एक व्यक्ति प्रयत्न करना चाहिए खुशी से रहने के लिए। ओके, सो कौन सा गाना गाई शारदा रशीदा के लिए? బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఉయ్యాలో బంగారు గౌరమ్మ ఉయ్యాలో, మా ఊరుకొచ్చింది ఉయ్యాలో, మా ఇంటికొచ్చింది ఉయ్యాలో। ये गाना गाकर रशीदा को खुशी कर चुकी थी। तो आप लोग भी, आपका कोई दोस्त या कोई सहेली आपको पूछेगी तो आप भी बिना शर्माते हुए कुछ बतकम्मा के गाना सीखना चाहिए, गाना चाहिए। ओके, राजनेश शर्मा हंस रहा है बेचारा, शर्मा रहा है। ओके ओके, सो रशीदा फिर क्या पूछी देखो। वाह, बहुत अच्छा गीत है। यस शारदा, you're superb, it is a beautiful song, your voice also very beautiful, the tune also it is nice, like that Rashida also appreciated to Sharda। then Sharda saying बतकम्मा जैसे लोक उत्सव देश की शोभा बढ़ाते हैं। okay, बतकम्मा जैसे लोक उत्सव, that mean local festival and the public festival, mainly public festival, that mean these particular Dasara festival not only celebrating our Telangana or Andhra Pradesh, all Indian people are celebrating. That's why this public festival, it is going to increasing our country's country name। okay, so भारत देश का नाम और भी बढ़ाने के लिए, हमारे भारत देश के गौरव को और भी उनकी गौरव शोभा बढ़ाने के लिए ये ऐसे त्योहार उपयोगी होती है, इसलिए शारदा बता चुकी। तो रशीदा क्या कही? हाँ शारदा, तुम ठीक कहती हो, अच्छा मैं चलती हूँ। यस शारदा, व्हाट डिड यू से? इट इज एब्सोल्युटली राइट। हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के त्योहार जो हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे बिना भेदभाव के, इट इज रमजान, क्रिसमस, दशहरा, संक्रांति, विनायक चौथी, होली, उगादी। सो जो भी त्योहार हो, हर एक त्योहार भारत का त्योहार ही है। भारत में रहने वाले इंसान कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कौन सा भी प्रांत का हो, लेकिन ये हम सबका त्योहार है। इसलिए भारत में रहने वाले हर एक नागरिक हमारे भारत देश में मनाने वाले हर एक त्योहार में भाग लेके हमारे देश की शोभा बढ़ाने में कामयाब होना, ये हम सबका कर्तव्य है। करके उन लोग दोनों बातचीत कर चुके थे और रशीदा वहां से चली गई। ओके, हाँ शारदा, तुम ठीक कहती हो, अच्छा मैं चलती हूँ। ओके देन बाय, I will leave, I'm going। so this is now our lesson also completed, and with that time also completed, and this is a time to leave। okay, मैं भी चलता हूँ, सब लोग खुश रहें। अगले दिन अगले क्लास में एक नया टॉपिक से हम लोग का मिलेंगे। और आज का एक, राजन शर्मा एक सेकंड ना, आज का एक छोटा सा गृह कार्य मैं देना चाहता हूँ। प्रत्येक रूप से बताने की जरूरत नहीं है, भारत देश में मनाने वाले त्योहार मेनली एक एक धर्म का एक एक त्योहार के बारे में आप लिखो। दैट मीन इन इंडियन पीपल विल सेलिब्रेट सो मेनी फेस्टिवल्स, नो, देन राइट अबाउट ए फेस्टिवल बिलोंग्स टू वन रिलीजन। दैट मीन हिंदू धर्म में एक त्योहार, ईसाई में एक त्योहार, इस्लाम में एक त्योहार, जैन में एक त्योहार। लाइक हमारे भारत देश में कितने भी धर्म हैं, वो धर्म के वास्ते एक एक त्योहार के बारे में लिखो। यही मैं आपको देने वाला गृह कार्य। समझ में आया सबको? थैंक यू एवरीबॉडी, बाय।